Okay, so quick recap, and today it will be a mathematics oriented class. So, quick recap, we are now familiar with the five Pandavas of this chapter. Okay, now SUVAT. So, S stands for displacement. And in your chapter and numericals, you may also see the word distance being used, but in that case, don't get worried because all we are talking is motion in a straight line. So in a straight line, it doesn't matter whether it's a distance or a displacement. Uniformly accelerated motion in a straight line. Okay, वो भी देखेंगे. So first is displacement. Then we have got velocity comes as two forms. One is initial velocity, one is final. So this is known as your initial velocity. Then this is known as final velocity. Okay, final velocity. Now look, velocity, you have two values, initial, final. That means velocity must be changing. दो values है मतलब change तो हुआ है. And something is not constant in this universe. From the last time that I was talking about hair combing till now, some 3 minutes have elapsed or 2 minutes. Time is not constant. So whenever you say this initial to final, this change must have happened over some time t. Do you agree or not? Right? And change in velocity, whenever you listen about the word change in velocity, whenever you listen about the word change in velocity, a new prani or jeev is born whose name is acceleration. समझ में आया? The unit of displacement would be meters. The unit of initial velocity would be meters per second. This will also be meters per second. Acceleration is rate of change of velocity. Velocity by time. मतलब meter per second by second, which is meter per second square, and time is second. इतना समझ में आया कि नहीं? इसको हम बोलते हैं SUVAT. SUVAT. And now we are going to study three equations of motions, which we call as the SUVAT equations. These will be very handy and useful to you even if you study BSc or MSc physics. You cannot forget. Three equations we are going to study. We are going to see the derivations, each of them. Point to remember. Sir, are these SUVAT applicable? As you said, we may study these till MSc, BSc. Are they applicable everywhere? Ask yourself one question. They are equations of motion. So whenever you see a motion related problem, you can apply them, but with two conditions. That's why I named the chapter. I had renamed the chapter. Motion in a straight line. A soccer player kicks a ball and it goes like this. Here we cannot apply these equations because this is not motion in a straight line. SUVAT equations are applicable only for motion in a straight line and for uniformly accelerated motion. इसका मतलब होता है कि grade 9 and grade 10, okay, you don't have 10, you have grade 9, or even in grade 11 when you study this, your scenario will be something like this. There will be a body. This body will have some initial velocity. This will come down to some final velocity. It will cover some displacement. This displacement means it's a straight line motion. There will be some time t for which it will take to cover this distance. During this journey, if at all there is acceleration, okay sir, there is no acceleration, then u and v should be same. No acceleration means u and v should be same. And if at all there is some acceleration, that acceleration should be constant. Means a का दो वैल्यू नहीं हो सकता है. समझ में आया? इसीलिए चैप्टर का नाम है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. If this criteria is there in your problem, then SUVAT is applicable. Now you should ask, sir, will this criteria be there? Yes. After you finish grade 9 first cut when you finish, then you ask yourself while doing these problems, you do it once again, you will get a little bit more maturity. You will see, अच्छा सर करेक्ट ही बोलता था, हर प्रॉब्लम में दो वेलोसिटी होता था, दो वेलोसिटी है बोल के तो इसका जन्म हुआ, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम में दो एक्सेलरेशन नहीं होगा. You can't have two accelerations. Acceleration is uniform. Which brings us to one more thing to get the feel of it. Say suppose if there is acceleration, say our acceleration is constant 2 meter per second square, means at the starting velocity is 0, after 1 second velocity will be 2 meter per second square, next second it will be 4 meter per second square, प्रति second 2 meter per second करके change हो रहा है ना? So how will the sound look like? It will go like this. Uniform acceleration. Feel लो इसका. Non-uniform ऐसे कैसे होता है? Let's go like this. That is non-uniform acceleration.
And it can also be retardation. That I have given a uniform acceleration of -1. I started with 5, after 1 second velocity becomes 4, after 1 second 3, 2. इसका feel लेंगे तो कैसे होगा? That's uniform retardation. लेकिन अगर आप ऐसे ब्रेक मारेंगे, that problem we won't get in grade 9. ये आपको स्कूल नहीं बताएगा ऐसे. Your school will be only teaching you these equation and you will be like a rattu tota. You will only think that I should apply this. You don't get to know whether you are doing right or wrong. आप ऐसे फिजिक्स को पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा whether this should be applied, whether this should not be applied, whether this is right, whether this is wrong. आपको सब समझ में आएगा. In fact, today the same class I did for Cambridge before you. You can see that video also. Now you can go across any playlist and watch anyone's video. In that channel, you are not restricted to see only CBSE. Na? You can go to IGCSE also. You can watch any video. ठीक है? तो we are going to see 3 equations of motion. इनका derivations आपको पूछा जाता है. You should first not write anything. First just enjoy to see how the equations of motions are derived. And all our problems will be based on these 5 Pandavas. Out of these we will get 3 equations. Those 3 are like your 3 weapons. One stun gun, one machine gun, one pistol. Every enemy can be killed by those 3 weapons. Choices for which enemy, which weapon do I pick? That will come with maturity. Based on what is given to you, what is not given to you, ऐसे करके. ठीक है? चले? So we are going for first. Rather than writing, enjoy the class to understand. Okay? So we are going for equations of motion. This is equation of motion and इसके ऊपर बेटे problems होते हैं और ये आपका first level of toughness और difficulty of grade 9 as you say. Matured content पढ़ रहे हो अभी आप. Matured content of physics. Cinema मत समझ लेना इसको. ठीक है? This is actually matured physics content. Rating M है इसका. It is not like your grade 8 friction, static friction, sliding friction, वो सब नहीं है. ये really matured content है. चलो मजा लेते हैं इसका. Equation of motion. Remember, the motion should always be straight line. ये एक criteria है हमारे लिए. और दूसरा, it should be uniformly accelerated. Uniformly accelerated means अगर acceleration है तो acceleration constant होना चाहिए. Some value will be there and throughout the scenario that value is applicable. Are you getting it? Right? Okay. Now we can also have a motion which is like that, but between the intervals where we are analyzing that motion, if you want to place these equations, we have to take a scenario where the acceleration is either or like this. Uniform होना है. नहीं चलेगा. Got it? Let's see. The first equation of motion हम कैसे derive करते हैं देखो. हाँ, it is derived from this factor that acceleration. Hey, all of you online, is the writing size okay? You are able to see clear? Okay. Yes. Acceleration is defined as change in velocity. किताब बंद कर लो हाँ, otherwise you will get prejudiced. Change in velocity over time. Acceleration क्या है? Rate of change of velocity. इतने समय में कितना velocity घट गया? समझ में आया? So for you, suppose you are buying a Maybelline nail polish. Last year the price was blah blah. After 2 years price became blah blah. So what is the rate of increase of Maybelline? The new price minus the old price divided by time. The time over which is it. तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा होगा बेटा? चेंज हमेशा होता है न्यू डेटा मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस ओल्ड डेटा दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम. बात समझ में आई? अब इनमें हम वैल्यूज डालते हैं. एक्सेलरेशन इज नोन एज ए, फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u, टाइम इज t. एंड इफ वी डू बाय बेबी स्टेप इट गिव्स अस at equal to v minus u. And the way we know this equation is v is equal to u plus at. This is your first equation of motion. Have you understood? U plus at. You can write down. Till now you write down. And have you understood what I explained? ये इतना तक लिखो, फिर इसका और मजा लेंगे. इतना तक आप लिखिए. ठीक है? ऐसे समझिए फिर लिखिए. Anyways, the class is getting recorded, so there is no fear factor for you. When they give to derive you, if you don't know this first definition, फंस गया आप. Acceleration is change in velocity over time taken. इसको लिखिए और फिर इसका मजा लेते हैं. मजा.
Hey Angad, how hot is it in Chandigarh? More or less? Less compared to Hyderabad. वाह, मजे ही है तुम्हारे. Look at Anya. Her eyes are like, I landed from moon yesterday. Sawadee She came from there only, na? But why is she making a face as she didn't understand what I told her? If I tell you Sawadee Khab, you should say Khab Khun Khab. Very nice, thank you. So where all did you go? Bangkok, Phuket, Pattaya, Krabi? Bangkok is Thailand. Yes, I didn't know that Bangkok is near this Himayatnagar. She asked the same question to me before she went. Bangkok, you have to take an auto from here and then you can get down at Panjagutta. From there it is very near. So she's the person for Shillong was in China. And she called her racist. I was in China. Shillong is in China. How did they allow her to sit in grade 10 and study geography? 5 days I would have made her sit outside the class. You should just call her racist. हाँ रेसिस्ट ही है और नहीं तो क्या. 5 दिन क्लास के बाहर बैठो सिर्फ. I was in China these days. Hey, which apartment do you stay? You know that, right? Sometimes if your school bus doesn't pick you up, how to come back home, you know that? Angad, you are having serious competition now. Angad has serious competition now. We have 2 in our batch. Angad is getting lost within the community. This one is getting lost outside the community. Good. Yashvi is also taking time to have a smile now. Yashvi, you can reach home if the school bus drops you somewhere midway. You have money in your pocket. No, you have money in your pocket. I have given you GPay access, everything. Can you reach home? You know your address or not? I don't know. She does know. Good. दीपांशु बिस्तर के ऊपर बैठ के देखो एकदम नवाब की तरह बैठा हुआ है ना? मजेदार. Anusha, what happened, beta? Why has silence crept into your life? No, sir. You are just missing Hyderabad, or you are trying to be the good girl at home? No, sir. In front of अभी भी उसका क्या हो गया पता है? उसको ग्रैंड पेरेंट्स पूरा ज्ञान दे रहे होंगे और उससे वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा. Am I correct? Whole day you must be that experimental guinea pig. चलो ये हो गया. Now let's see the beauty part of it. Physics is all about feel लेना, मजा लेना, तभी आपको मजा आएगा. नहीं तो आप बोर हो जाओगे. चलो. So first equation of motion बच्चा हमने क्या से again no pens just understand मजा लो. The first equation of motion is V equal to U plus AT. Now ask yourself one plain question. Suppose there is a ball, ठीक है, और ये बॉल को मैं ऐसे नीचे रोल होने देता हूं. बॉल ऊपर से नीचे रोल हो रहा है. Obviously इसकी velocity बढ़ेगी गर्र करके. So this is a positive acceleration case, right? Now say for example our scenario was like this. Now first question is on this. Is SUVAT applicable here? Yes, SUVAT is applicable here. This is motion in a straight line. ये line straight होना चाहिए. समझ में आया? हाँ, ये curve नहीं होना चाहिए. That's why I said a football kick will not. These equations are not applicable. Your motion should be in a straight line. So straight line can be going up this way, this way. ये clear हुआ आपको? So when we go to gravitation, we will also learn that motion in gravity is also SUVAT applicable. That is also motion in a straight line. Anything thrown vertically upwards is also motion in a straight line. So have you understood? Now let's say our body is rolling from position 1 to position 2. There is no acceleration. कैसे जा रहा है? Cruise. No acceleration. Whatever is velocity here should be velocity here. अरे वही तो, अरे एक्सीलरेशन को 0 कर दे तो v और u बराबर हो गया ना. समझ में आया? एक्सीलरेशन 0 कर दो इस इक्वेशन में. v is equal to u. फील समझ में आया? फील. Yes. अब एक प्रॉब्लम करते हैं इसको सीधा प्रॉब्लम. ओके, डोंट डू एनीथिंग. प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट आंसर्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट. हाउ यू गॉट दिस आंसर? सो आई से अ बॉल रोल्स अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट. क्या बोला? फ्रॉम रेस्ट.
ये बोलते ही आपका जो ये कान है ना, इट शुड इंटरप्रेट रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द टेक अवे. बॉल कैसे रोल हो रहा है? रेस्ट से रोल हो रहा है. एज सुन एज यू हियर द वर्ड रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. ठीक है. एंड इट इज गिवन एन एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और इस बॉल को हम फॉर अ टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स रोल करवाते हैं करके. एंड आई टेल यू 10 सेकेंड के बाद वो पोजीशन 2 पे जाके पहुंचता है. ये है उसका पोजीशन 1. बताइए यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या है? मतलब आपको पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या है. समझ में आया? अ बॉल स्टार्ट्स टू रोल फ्रॉम रेस्ट फॉर अ टाइम ऑफ 10 seconds with a constant acceleration of 1 meter per second square. Now ask yourself, is it motion in a straight line? Yo. Is it uniformly accelerated motion? One value of acceleration means throughout this journey, acceleration remains constant. The rate of increase of my pocket money and your pocket money is same. But your pocket money's definition is different, my definition, but the rate is same. His performance increased 5% over last year. His performance also increased 5% over last year. That does not mean this year both marks are same. He increased 5% from what he scored last. पिछले बार इसको 0 मिला था, अब 5% इंप्रूवमेंट हुआ है तो 5 मिला है. ये 10 में था, इसका 5% इंप्रूवमेंट हुआ है, सो 0.05 जैसा इसका बढ़ा है. Have you understood? The growth rate is same. Population of India is say growing, and the population of some other country, the growth rate is same. That does not mean the final population will be same. They are growing from the same. ठीक है. ये अब हमको बोला इसका फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो. Then like पक्का CBSE बच्चास we start writing given. What all are given to you? Sir, initial velocity is 0 meter per second. Time given is 10 seconds. Acceleration A is 1 meter per second square. And then what is to be found out? To find what is the final velocity. Sir, ma'am told us V equal to U plus AT. Putting this equation, initial velocity is 0, acceleration is 1 and T is how much? 10. So we say this is 10 meter per second. Sir, I also got 10. Ma'am gave me full marks. प्रॉब्लम इज करेक्ट. क्या आपने फिजिक्स सीखा? नहीं सीखा. अब इसका ब्यूटी देखते हैं. समझ में? दिस इज हाउ यू डू द प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम. ब्यूटी देखते हैं अभी इसका. ब्यूटी. सो लेट्स सी दिस इज अ टाइम स्केल. स्टार्ट्स फ्रॉम 0, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड दिस इज 10 सेकंड. बॉल यहां से रोल होना स्टार्ट हुआ. दीज आर ऑल टाइम. ओके, फर्स्ट सेकंड, सेकंड. बॉल यहां से रोल हो रहा है 0 मीटर पर सेकंड में. एक्सेलरेशन क्या बोला? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बोले तो 1 मीटर पर सेकंड. यहां से यहां कितना टाइम है? 1 सेकंड. 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज होगा? 1 मीटर पर सेकंड. यानी फर्स्ट सेकंड में आपका वेलोसिटी हुआ 1 मीटर पर सेकंड. यहां से यहां हाउ मच इज द टाइम? 1 सेकंड. In 1 second interval, another 1 second over the past 1 second. So it becomes 2 meters per second, 3 meters per second, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the value that we calculated. समझ में आया? Feeling? Yes. एक और प्रॉब्लम देखते हैं. And then I'll give you time. You can note down. Not an issue. Next problem, same type. Okay. A ball is rolling with a velocity of 5 meters per second. It is rolling with a velocity of 5 meters per second and has been brought to rest. Started from rest. Brought to rest means final velocity is equal to 0. Brought to rest. हम किसी से चल रहे हैं और final velocity 0. Got it? This will be my initial velocity in this case. Have you understood or not? Clear? Don't see the इसी देखिए ना, बुक देखने की जरूरत नहीं. initial का. How did the ball come to rest? Somebody must have applied a brakes. Some wind must be blowing in opposite direction. Some friction must be caused by the ground. ऐसे तो रेस्ट में नहीं आएगा ना. कुछ तो उल्टा हुआ होगा इसके साथ. By applying a uniform retardation of 1 meter per second square. They say
that the velocity of this ball which was coming at 5 second, इसको रिटार्ड कर दिया गया, रुक जा, लेकिन कैसे? यूनिफॉर्मली, रुक जा, यूनिफॉर्मली फील लेना जरूरी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? एंड ये भी हुआ हमारा, मान लो ये हुआ हमारा 5 सेकंड में. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम. 5 meters per second में a ball is rolling and in the next 5 seconds the ball came to 0. Somebody applied brakes with a uniform retardation of 1 meter per second square. Now retardation is a literature word. Physics में इसका कोई जगह नहीं है. Physics sees everything as acceleration. And when you hear the word acceleration in terms of literature, what do you feel? The business showed an accelerated growth, बढ़ गया. The business showed a retardation, business घटा. But in mathematics, we don't have retardation. We have everything as acceleration. So I say the business booked a profit of 10 rupees, P equal to plus 10. The business booked a loss of 5 rupees, P equal to minus 5. हमको L लिखने का जगह नहीं है. The formulas don't have L. Do you have V equal to RT? No, we have V equal to U plus AT. So our problem, for this problem, how we will do this problem? We'll say, given, what is given to us? U is equal to 5 meter per second. V is equal to 0 meter per second. This is derived from the literature, brought to rest. Acceleration A will be negative 1 meter per second square. क्योंकि acceleration बोले तो बढ़ना, यहां घट रहा है. किसी घटते चीज को अगर आप पॉजिटिव आउटलुक से बोलेंगे तो उसमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा. He is a very punyavan boy, good boy, pious. So his punyavan index is P equal to 5. He is 5 is an index of measurement. He is a papi boy and he is 3 unit papi. So his punyavan index will be how much? Minus 3. Because we don't define papis. We define everyone as punyavan. It's like court. Guilty? So you plead not guilty. You are not guilty. So you plead, you will be pleading guilty. In court, whenever you are taken to court, you are at that time accused. They cannot say you are guilty. You are accused. आप प्रूफ करो उसको कि वो गिल्टी है. आप बेकसूर प्रूफ नहीं करते हैं, आप कसूरवार प्रूफ करो उसको. ठीक है? That is the perspective to look at it. So this, and what is the time? The time is taken as 5 seconds. Apply your formula again. V is equal to U plus AT. Sir, V is 0, U is 5, A is negative 1 and T is 5. Which means, sorry, AT. Oh, U is, हमें ये निकालने क्या बोला था? Oh, ये छोड़ दो. Let's say find the initial velocity. Okay, let's say this is find the initial velocity. But this is not given, brought to rest, so we don't know what is U. So let's calculate what should be the initial velocity. 0 is equal to U minus 5, or U is equal to 5 meter per second. Did you understand? Suppose the initial velocity is not given to you. A body, the question is something like this: a body in motion has been brought to rest in 5 seconds by applying a retardation of 1 meter per second square. Calculate the initial velocity. At what velocity it started. Now let's see the beauty of this problem also. Then you will understand kaisa hai. So this problem is something like this. I have two spans out here which are into 5 seconds. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. 0th, 1, 2, 3, 4, 5. समझ में आया? यहां पे वेलोसिटी हो गया कितना? 0 मीटर पर सेकेंड. Got it? Acceleration is negative now, and we calculated initial velocity as 5. Let us see whether it matches or not. Initial velocity is 5 meter per second, right? What is the acceleration? The acceleration is a negative of 1 meter per second per second. 0 to 1 second कितना सेकेंड हुआ? 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा? इस बार घटेगा, because acceleration is negative. So it becomes 4 meter per second. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 मीटर. यहाँ कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे 0. अपना कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है. V is equal to U plus AT. V is 0, U is unknown, A is minus 1, T is 5. So 0 is equal to U minus 5. Now you don't need to copy this. Oh, sorry, you don't need to see from here. I am giving you 1 minute, 2 minutes time. You copy down whatever you understood
And if you think you have not understood something, I am there to address. अभी आप copy करो and you start doing this problem on your own. Make it correct. You have to copy everything. Again, फिर वही. If you think without copying anything you have understood everything, I am fine. You are not at that age that you are not a kindergarten student where I'll tell you, children copy the whole board. It's not possible. Sometimes when you are in higher classes, the professor will use 2 boards. You find what is a takeable from here. What did you learn from here? You write that. That learning can be in short notes. That learning can be this. But at your age, if you're not writing anything and you've said, sir, I've understood everything, I'm not writing, then you are being lazy. वो भी मैं बोलूंगा. Because अभी आप जो absorb कर रहे हो ना, वो fast होगा. आप घर पे जाकर नहीं पढ़ोगे, ये सब कल अगले क्लास में आपको Greek and Latin आएगा. And I can bet it will come Greek and Latin to you. When I give you problems, you will not be able to do. Doing, listening, learning, and doing together, that's called the kinesthetic approach. Origami, समझते हो ना? Paper. If I show you how to make a tiger, it looks very easy. When you start making with me, after 3 folds, you say, sir, show that previous step again. When you do it, you learn. लिखना जरूरी है. और आप प्रॉब्लम को सजा लो ना अपने तरीके से. At least these things you should know. Final velocity, if brought to rest means final velocity. That's how problems will come. Brought to rest, final velocity is 0. Starts from rest, initial velocity is 0. And the first equation of motion is v equal to u plus at. Put it under a red triangle, rectangle, and when you change to the new page and you're writing something new, immediately on the new page, first thing you write is v equal to u plus at. क्योंकि ये चीज आपको याद होना है. This equation you have to remember throughout your BSc, MSc if you're studying physics or engineering or whatever. So when you start a new page, the first thing you write is v equal to u plus at. v equal to u plus at. ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा. And you will get a lot of problems like this in your book. The job is to understand. So you should know what is SUVAT, you should know when SUVAT is applicable, and you took the first equation of motion of SUVAT, which is v equal to u plus at. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 प्रॉब्लम करेंगे. या तो आपको समझाया कि फर्स्ट इक्वेशन को कैसे हम अप्लाई करते हैं फॉर अ एक्सीलरेशन एंड फॉर अ रिटार्डेशन केस. इफ रिटार्डेशन इज मेंशन टू यू, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक एक्सीलरेशन एज नेगेटिव. And if in a problem you are calculating acceleration and it comes out negative and the problem says that what was the retardation, please give your answer in positive quantity. Did you understand what I said? So if we get a negative, we have to just... No. Suppose the problem says calculate acceleration, then whatever sign you are getting, you release it like that. If the problem tells you, okay, let me put it in simpler ways. If the problem says calculate profit, if you get plus profit, you write plus profit. If you get minus profit, still you write minus. If the problem tells you calculate loss, because you will be calculating profit only, and your answer will come what? Negative. Profit equal to negative 2 rupees. But you have to answer as loss. So you answer loss of 2 rupees. Okay. So if the problem says calculate retardation, then please remember that the acceleration value you will get is negative. But when you release your answer, release it as positive. Because retardation में positive negative नहीं होता. Retard का मतलब ही है negative. ठीक है ना? चलिए, first equation समझ में आया? Okay. Now we go to the second equation of motion. 3 equation सीखना है हमें. Second equation जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं. We knew something called average speed. Average speed was given as what? Total distance traveled divided by total time taken. This was our average speed. Now in this chapter, we also need to know something called average velocity. Average velocity. So what should be average velocity? Total displacement, है ना? Or net displacement, whatever it is. You should write the word net is the better word. Net displacement over time, which is nothing but S upon T. Net displacement over time, you're finding the average. There is another formula to find average velocity, which is initial plus final divided by 2. Initial plus final divided by 2 is just average. But mind you, this formula is valid
only when acceleration is constant. Now ask yourself, you are in grade 9. All the problems you will get are the problems where acceleration will be constant. That's what we learned. Equations of uniformly accelerated motion in a straight line. The chapter is not motion. Uniformly accelerated motion in a straight line. So does this criteria fit you? Yes, it fits me very well. Acceleration is constant. That means I should be able to not only use this formula, I should also be able to use this formula. Did you understand this or not? ओके लिखने में बिजी मत हो, इसलिए बोलता हूं ना, देखो लिखने से नहीं समझोगे, आप नया चीज पढ़ रहे हो बेटो. इट्स नॉट अबाउट मी एक्सप्लेनिंग इट. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज मच मोर फ्रेश, सेकंड बार वही फ्लो नहीं आता है, कोई बात नहीं. आई सेड एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, व्हिच इज s by t. Net displacement from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. Net displacement is this. This is the net displacement. नहीं पढ़ते हो घर पे, नहीं तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था. Net displacement is the shortest straight line. These are all individual displacements, but the net displacement is I go to north, I go to west, I go to south, and I come back east. Net displacement is 0. However, there are some individual displacements also. And it became 0 because if this was a positive displacement, this was a negative displacement. If this was a negative displacement, this was a positive displacement, right? Average velocity is also given by the equation u plus v divided by 2. This is valid only when acceleration is constant. मतलब higher classes में if you get scenarios where acceleration is not constant, you can't apply this formula. But let us not bang our head on that. Which grade are we in? Grade 9. In grade 9, what is the name of the chapter? Uniformly accelerated. Means in our grade, acceleration will always be uniform. Means acceleration will be constant. So can we use this formula? Yes, we can. Have you understood now? ठीक है? ठीक है तो आगे बढ़े. Still you are having a vague face. If you ask anything, please ask. So how did you get the formula? This you will not get it now. For this to derive, we should know slope and all. Average velocity is u plus v by 2. इसको डिराइव करने के लिए आपको स्लोप पता होना पड़ेगा, आपको नहीं पता है अभी. So you keep it as granted for you. Just like equation of a circle is, area of a circle is pi r square. How did you get it, sir? Beyond your, how did I get pi r square? Why pi r square? You understand? Not at your level you can't understand. Can you explain me why it is pi r square? No. ठीक है, वो वैसा ही है ये चीज. चलिए, so I write, if I combine these two, can I write s by t is equal to u plus v by 2? This is equal to this. Clear? Right. So my s becomes equal to ut plus vt whole thing by 2. Agreed? I've just taken t on that side. Array t into u plus v divided by 2. Sir, this is UDM. Okay. Now I'm rubbing this v. Where is the first equation of motion? First equation of motion that we learned was v is equal to u plus at. Sir, this v and this v, sir. Do you see? This is also v. Replace this value here. So let's replace ut plus v का जगह में क्या लिखेंगे? u plus a t into t divided by 2. Sir, what all you are doing? Nothing, darling. U plus at has been written here. That's all instead of v. Possible? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे. If I solve it further, it becomes what? ut plus at square divided by 2. ut plus ut, 2ut, 2 times of unit test, plus at square divided by 2. Or I can write s is equal to 2ut by 2. डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया भाई साहब. at square by 2. 2 and 2 gets cut 2, and this second equation of motion becomes s equal to
ut plus half at square. This is your second equation of motion. You can now write down, and then we will talk about the beauty of this equation. First equation starts from the narration what? Acceleration equal to change in velocity over time. Second equation derivation starts from average velocity is s by t, average velocity is u plus v by t. We equate these two, and instead of v we put in the first equation of motion. ये लिख लीजिए, फिर इसकी बाद ब्यूटी को देखते हैं. अभी आप खुद से करने की कोशिश कीजिए. डोंट लुक एट द बोर्ड, ट्राई टू डिराइव ऑन योर ओन. s by t is equal to u plus v by 2. खुद से करो, I'll wait for you. s by t is equal to u plus v by 2. फिर इसको सॉल्व करो. v को एबॉलिश कर देना है और उसकी जगह पे u plus at ले आना है. आपको मजा आएगा करके. खुद से करो. जरूरत पड़े तो ही बोर्ड देखो. And you may put the value of v here also. मैंने यहाँ पे डाला, आप यहीं डाल दो, कोई बात नहीं. जब तक आपका if your simplification is correct, you put the value of v here itself. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सिंप्लीफिकेशन को करेक्ट रखना सिर्फ. दो ठीक है, तो किया u plus v by 2, u plus v at, ठीक है ना. हाँ, u plus v divided by, and here it should be s by t is equal to, देखो s by t is equal to this. Now you take the t, multiply here, or else you solve it first. u plus u 2u करो ना. वही नहीं, यहाँ इक्वल डालो ना. चलो आगे चलो. तो u plus u 2u plus at divided by 2, right? Now you write here s equal to, or बताओ, or is that symbol? और बाबा, हाँ, और s is equal to, now multiply the t को इस साइड मल्टीप्लाई करो, 2ut. अरे भूतनिका, this t into this, हाँ, 2ut plus at, हाँ, divided by 2. Now break it. कौन सा 2 कैंसिल? ये 2 जो है ना, this 2 is the ancestral property of brother and sister. तुम इसके साथ कैंसिल कर देगा तो ये क्या खाएगा? You are 2 brothers ना, both of you will inherit your ancestral property. आप खाली अकेला खाना चाहते हो. 2ut into at square, then you can cut it to. हाँ, if it was bracket. इसीलिए इसको इसका संपत्ति दिया, इसको इसका संपत्ति दिया. ये 2 दोनों को आता है ना. डोंट टेल ऑल दिस यार, ये क्लास 6 का प्रॉब्लम मत लाओ अभी. अंडरस्टैंडिंग इश्यूज. हाँ, so you get the confidence ना. काय को बोर्ड देखने का, आपको समझाया इसीलिए that you first understand s equal to ut plus half at square. Yeah, done. All of you could get this derivation of this expression, s equal to ut plus half at square. This is your second equation of motion. ठीक है बच्चा, अब आ जाओ, मैं मिटा रहा हूं सब कुछ. थोड़ा सा ब्यूटी देखते हैं. ब्यूटी, थोड़ा सा ब्यूटी देखते हैं इसका. अब देखो, अब ऐसा वर्ड बोलूंगा ना, जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी पांव से. पूरा 1 मिनट में लगेगा कैसा बेइज्जत करूंगा अभी. देखो 1 मिनट में बेइज्जती फील होगा अभी. जस्ट सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाज व्हाट? v equal to u plus at. Agreed? Second equation of motion is s equal to ut plus half at square. Something of beauty. In every equation, one variable is absent. इसमें देखो displacement नहीं है, इसमें देखो final velocity नहीं है. Ultimately, we are playing with 5 पांडव. How many variables? ఒక్క, 2, 3, 4. 4 variables. But we have 5 here. Who is absent? Displacement is absent. 1, 2, 3, 4. How many variables? 4. Somebody is absent. Final velocity is absent. However, the problem is that this is you people. You people do not see anything special out here. You think that you learned second equation of motion after coming to grade 9. You are learning this right from grade 6. Distance is equal to speed into time. S
equal to u into t plus half at square. All the problems that you did in grade 6, you had no acceleration. अरे भैया ये तो जीरो था, इसलिए तुम्हारा फॉर्मूला है the distance equal to speed into time था. बट पेरेंट फॉर्मूला ये है. ग्रेड 6-7 में जब आपको प्रॉब्लम्स देता था ना, did they ever talk about acceleration? No. So this part was zero. Distance equal to speed into time. If there is no acceleration, whatever is initial velocity is final velocity. Distance equal to speed into time. मजा आ रहा है? अब फीलिंग आ रहा है ना कितना कितना बेवकूफ जैसा काम किया. इतना बड़ा डिराइवेशन जो किया, ये आपको ग्रेड 6 से पता है. मैंने आपको आपके हाथ में ऐसे 6 लिख दिया. 6 मैंने, ये आपका हाथ है ना, दिस इज योर हैंड, से सपोज हैंड, मैंने इसे 6 लिख दिया. मेरे तरफ से 6 लिख के देखा. आप अपने तरफ से क्या देख रहे हो? 9. चीज एक ही है. The perspective of seeing something differs from what position you are seeing it. मैंने, आपने हाथ बढ़ाया, मैंने 6 लिख दिया. आप बोले सर 9 क्यों लिख रहे हो? अरे 9 कहां से, 6 से लिख रहे हैं, इस साइड से आके देखो. तो ये तो आप ग्रेड 6 में भी पढ़ चुके थे, कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हो. बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पेरेंट फॉर्मूला. मजा आया, समझ में आया? Acceleration was never there in grade 6. There was never acceleration. Distance equal to speed into time. ये देखो हो गया वो फॉर्मूला. ठीक है. So s equal to ut plus half ad square. This is the distance. इसके ऊपर एक प्रॉब्लम बना के देखते हैं फीलिंग लेने के लिए. फीलिंग अब जब पहला वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं. पहला वाला प्रॉब्लम क्या था? A ball starting from rest travels a distance नहीं है, travels a time of 10 seconds with an acceleration of 1 meter per second square. Some time will be here. Calculate how much was the displacement. In previous problem we calculated final velocity. Now we will calculate how much did it roll. So how to view the problem? There is a ball which is at rest. हमने इसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन टक करके मार दिया. एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जाना शुरू हो गया. अच्छा, माय वन क्वेश्चन टू यू. क्या करूं, मेरे अंदर वो खुजली है. देयर इज अ बॉल एंड इसको मैंने फिंगर से कैरम के स्ट्राइकर की तरह टक करके मार दिया. Will there be constant acceleration? What case of motion it will be? It is on the ground, a billiards table, or on the ground somewhere. मैंने इसको जस्ट टक करके ऐसे मारा. Initial velocity 0. What do you think final velocity would be? 0. हाँ, इतना सोचने का क्या है? ये बॉल थोड़ी जाता रहेगा, कहीं ना कहीं ज्यादा तो रुक जाएगा. क्यों रुक गया? फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस. अगले चैप्टर में यही पढ़ना है. तो इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है? इसमें एक्सीलरेशन. इतना आंसर नहीं चाहिए, कोर्ट में सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए. इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है? इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है? एक्सीलरेशन एक आंसर, फिर रिटार्डेशन एक आंसर. व्हाई रिटार्डेशन, व्हाई एक्सीलरेशन? आई एम आस्किंग इज देयर एन एक्सीलरेशन. पीटूंगा पूरा, ठक करके मारा है. एक्सीलरेशन. हाँ, रिटार्डेशन. अरे यू अंगद, व्हाट हैपेंड टू योर कैमरा? हाँ, तुम उसको छोड़ दो ना. एक बार स्काइप कॉल हैज बीन कनेक्टेड, यू लीव योर माउस एंड लीव योर कीबोर्ड. योर पेन शुड बी इन योर हैंड. एज लॉन्ग एज यू आर वेयरिंग क्लोथ्स एंड इन प्रॉपर अटायर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? खाली छेड़ते रहते हो, साउंड बीस दैट, वो सब छोड़ दो. ठीक है. दीपांशु, दूसरी बार करोगे ना, उंगली में पेंसिल डाल के उंगली दबा दूंगा. इसी छोड़ो और पेन और कॉपी में ध्यान दो. हाँ, 1 मिनट. हमने इसको टक करके मारा. आप खुद ही बोलते हो कि फ्रिक्शन के लिए जाके रुक जाएगा. फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ओपोजेस मोशन और हेल्प्स मोशन. इट मूव्ड बिकॉज आई गेव अ फोर्स फ्रॉम माय फिंगर. टक करके friction started opposing it. Body is under negative acceleration. Continuously friction is saying mata नहीं, मैंने मारा है ना, थोड़ा तो आऊंगा. ठीक है, आके रुक जाओ. Retardation is retardation. Acceleration means think like that. Its velocity should have increased.
ये रुकना ही नहीं चाहिए था. Put the marker pen on my arm like this and make my arm like this. Acceleration होगा, धर्र से जाएगा, होगा ना? Why no? That's why you are not getting it, na? See, my arm is like this, and I make my arm like this with the roller pen. Will it not roll it down with a lot of speed? Acceleration. And if I want to push this upwards now, अब इसको ऊपर भेजूंगा, ये जाएगा पूरा ऊपर? नहीं ना? Retardation. Who is acting against it? Gravity. ग्रेविटी नीचे बुलाना चाहता है, मैं रोल करके ऊपर ले जाना चाहता हूं. यही तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. As I told you, this chapter is all about aspects of motion. We don't answer why this is happening. Why did the ball stop? We are not answering. See, get the beauty of the chapter that we learn in kinetics. Next chapter. Why did the ball speed up? That we are not asking here. We're just asking you how much did the ball speed up? How much distance? So, but at the start, it is like accelerating only, right? In the start, it's accelerating and then it's deaccelerating. Right? So, overall, what is the net? I'm asking, is it a case of acceleration or deceleration? It's a case of deceleration. If it is acceleration, then the overall, आपके बिजनेस में पहले दिन आपने 5 रुपया कमा के अगले दिन 10 रुपया लॉस कर लिया. ओवरऑल क्या है? बिजनेस घाटे में ही गया ना. सर पहले दिन का देखिएगा. सर पहले दिन मैंने बिजनेस अच्छा किया था, उससे कोई मतलब नहीं है. I'm asking, what is the overall scenario? Had it been accelerating, this ball should not have been come to a rest. So our question is, now we go back to our problem. यही problem है. A ball is moving from rest and it accelerates. Means here the speed here should be more. It accelerates. Sir, you just said that the ball will stop. ठीक है, stop करेगा वहां पे ना. हम इस बीच में देख रहे हैं. As our Angad was saying, initially it will accelerate. So this is the accelerated portion of the motion that we are seeing. A ball initially at rest accelerates at the rate of 1 meter per second square, right? For a time of 10 seconds. Calculate the displacement of the ball or the distance covered by the ball, because it's a straight line. तो हम अभी क्या देखेंगे? If this is our problem, what all is given to us? The initial velocity is 0 meter per second. Angad, mute your mic. Acceleration is equal to 1 meter per second square. Time is equal to 10 seconds. And to find क्या नहीं दिया हुआ है आपको? डिस्प्लेसमेंट s नहीं दिया हुआ है आपको. ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर देंगे सीधा सीधा. s equal to ut plus half at square. So let's see what is s. U is 0, so this portion becomes 0. 0 into 10 is 0 plus half. A is 1. T square means 100. 10 into 10 is 100. So 100 divided by 2, it should be 50 meters. मतलब 15 मीटर 50 मीटर, सॉरी 15 नहीं 50 मीटर तक 10 सेकंड में ये बॉडी कवर कर लेगा. How is this problem different from grade 6? In grade 6, they will only give you what is the initial velocity, not the acceleration. So look at the formula again. What is the distance traveled by a body? Just see the beauty of the formula. Distance is equal to speed into time as grade 6, but we are accelerating. तो थोड़ा और distance भी cover करना चाहिए ना. वो थोड़ा और distance is nothing but half at square. This is the extra component that you are traveling due to acceleration. Half at square. Feeling low, तभी आपको समझ में आएगा. This is the extra that you are traveling. अगर एक्सेलरेशन नहीं होता हम इतना ही जाते, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है इतना तो जाएंगे ही, साथ में इतना भी जाएंगे. समझ में आया? दूसरे वाले प्रॉब्लम को भी करके देखते हैं. इन दूसरा वाला प्रॉब्लम व्हाट डिड वी से? वी सेड दैट अ बॉडी कम्स टू रेस्ट मींस फाइनल वेलोसिटी 0 with the acceleration of 1 meter per second square negative, which we said that the acceleration is negative in our next problem, and we said that the time taken is how much? 5 seconds. And we calculated and found that the initial velocity is 5 meter per second. Here they are asking us again, calculate the distance. Now look, this problem will be given so stylishly. इसको स्टाइल में कर दे इस प्रॉब्लम को. Let's first understand the problem. A body with 5 meter per second has been applied a retardation of 1 meter per second square for a time of 5 seconds. Calculate the distance the body will travel. Shall I make it now stylish? Same problem. A car traveling with 5 meter per second has suddenly been applied a brake causing a retardation of 1 meter per second square. Calculate the braking distance. Braking distance is the distance required to bring the vehicle to 0. देखा स्टाइल कैसे बदल गया. Calculate the braking distance. When do you brake? When you see a बच्चा. When you think that the बच्चा is far away from your braking distance.
हमारी गाड़ी को यहां से यहां, अगर यहां पे अगर हम ब्रेक मारे ना, गाड़ी यहां पे रुकेगा। बच्चा कहां पे होना चाहिए? बच्चा यहां पे होना चाहिए। बच्चा यहां पे हो जाएगा तो फोटो बन जाएगा बच्चा। समझ में आया? दिस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। You apply your brakes when you anticipate that the target is beyond your braking distance, है ना? तो यहां पे इजी लैंग्वेज में आपको बोलेगा, सीबीएसई लैंग्वेज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मेरा जैसे पाखंडी टीचर होगा तो क्या लिखेगा? कैलकुलेट द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। आई विल नॉट से बॉडी कम्स टू अ रेस्ट। ब्रेकिंग डिस्टेंस सुनते ही तुम समझ लेना कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अ बॉडी विल ट्रेवल आफ्टर द ब्रेक्स हैव बीन जैम्ड। ब्रेक मारने से वहीं तो नहीं रुकता है ना, थोड़ा तो आगे जाएंगे। दैट डिस्टेंस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। चलो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। सो यूजिंग द सेम फॉर्मूला, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AD स्क्वायर। अब यूटी का वैल्यू कितना होगा? U 5 है। टी कितना है सर? टी 5 है। हाफ कितना है सर? हाफ हाफ ही है। ए कितना है सर? -1। और टी स्क्वायर 5 × 5 25। बोले तो कितना आया? 25 माइनस 25/2 12.5। आंसर आया 12.5 मीटर। द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ दिस बॉल इज 12.5 मीटर्स। अगर इससे पहले कोई चींटी आ गया, राम नाम सत्य है, और अगर चींटी यहां है, एक दिन और जिंदा रह लिया वो। समझ में आया? अब आप कुछ कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। हम थर्ड इक्वेशन भी देखेंगे। अब बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, आपको फीलिंग देना, फीलिंग आना बहुत जरूरी है। ठीक है? व्हेन यू ड्राइव अ कार, आपका जो जजमेंट आता है, द जजमेंट इज दिस ओनली, बट दैट टाइम यू डोंट सी अ बकरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन से जयदीप सर हैड टोल्ड S इक्वल टू UT, अब हम मारेंगे, तो बकरा वहां पे चिल्ला रहा है, बकरा को मार ही दिया। तो ऐसा थोड़ी मैथ्स होता है ना? ऐसा नहीं होता है। और जब आपको कोई इलिटरेट ड्राइवर गाड़ी चलाना सिखाएगा पहले, हाँ आदमी, बच्चे जा रहे हैं ना, स्कूल आ गया ना, बेटा ब्रेक में पाव ले लीजिए, नहीं हमने तो फिजिक्स पढ़ा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इतना होता है। देन ही विल से, अरे पढ़े लिखे गंवार, बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू यूज द एजुकेशन, दैट्स व्हाई ही कॉल्स यू पढ़े लिखे गंवार। ऐसे गाड़ी नहीं चलाते हैं। समझ में आया? चले थर्ड इक्वेशन में। हाँ, और नहीं देखे। देयर वाज अ पर्सन, ही वाज ट्रैवलिंग विद हिज फैमिली मेंबर्स एंड द टॉलेस्ट अमंग देम वाज ही वाज अराउंड 5 मीटर्स बोल रहा हूँ। हाँ, he was around 5 feet tall। ठीक है? he was 5 feet 6 feet के आसपास, 5.5 फुट टॉल था। तो जा रहा था, he was good in mathematics, statistics में बहुत अच्छा पढ़ाई किया था। देन रिवर आ गया। रिवर आने के बाद वो देखा रिवर में कैसा है, तो रिवर में स्टिक लेके 3 जगह रिवर को डिप किया। 3 जगह में डेटा मिला उसे 1 मीटर और 2 मीटर्स मिला डेप्थ। So he calculated the average, 1 + 1 2 + 2 4, 4 divided by 3, it should be 1 point something. Every member in his family was at least 4 feet लंबा। सबको बोला, अरे मैक्सिमम इज 1 point कुछ फीट है, पाँव में नीचे तक पानी आएगा, चलो सब लोग इसमें चलते हैं। ऐसे जाते गया, बीवी बच्चा सब डूब गया। डूबेगा ही ना, बेवकूफ की तरह वो 3 जगह में लेके, बट ही थिंक्स ही हैज डन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया, एवरेज कैलकुलेट किया, और सिर्फ वो बच गया। बाहर आके देखा घर वाला कोई नहीं बचा, और फिर वो बोला स्टैटिस्टिक्स बकवास का मैथमेटिक्स। बट इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स बकवास का मैथमेटिक्स, ही इज बकवास। He applied the law of average by dipping the stick at 3 places in the lake, and those 3 places were 1 meter, 1 meter, and 2 meters. So overall, how much is the total? 4 meters. 4 divided by 3 observations, 1 point something. And everyone in his family was 3 meters, 3 feet at least. So he said, किसी को तो डूबना ही नहीं चाहिए। तो थोड़ा दिमाग लगा के काम करने का, ठीक है ना? जैसे ऐसा अंगद को सुला दो, ठीक है ना? इसके यहाँ पे फायर दे दो, बॉयलर, और यहाँ पे क्या दे दो? रेफ्रिजरेटर। तो हम बोलेंगे अंगद का बेली बटन में कैसा रहना चाहिए? एवरेज टेम्परेचर रहना चाहिए। लौंडा मर नहीं जाएगा इसमें स्टैटिस्टिक्स थोड़ी काम में आता है। सी स्टैटिस्टिक्स से यहाँ पे बॉयलर रखा है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखा है, तो इधर एकदम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है। देखा, 2 बच्चा हंस रहा है, बाकी लोग इतना सीरियस से पता नहीं, मैंने शायद कुछ जर्मन या रशियन में Okay, the boy has been made to lie down and his head is being put under a boiler and the legs in a refrigerator, with the assumption that the boy's belly button would be something around that average, which means nullifying the effect of both. We lost our boy.
That's because some of the idiotism of science that we put into practice. Now, I've not been teaching in Russian that you have not. Anusha का मुंह देखो जैसे मैं ये Istrolova, la katroste, yentre costa, roda, boile, veterova, la sa, yentroste, la rayosta, Ristros, Mikhailov, Dmitry, Riskalova. अरे यार अपना भाषा में पढ़ा रहा हूँ यार, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का. What is humor quotient in you, sir? 0. What is sadness, sir? 0. Sir, do you have emotions? No, sir. I'm a zombie. I don't have feelings. Put Trishul in me, I still don't smile. Give me calendula flowers, I don't smile. तो आ जाओ हैदराबाद. Dad is here or what? हाँ आ जाओ. तुम्हारा हो गया उधर, पूरा प्रेशर में है, तुम देख के समझ में आ रहा है. ठीक है, दोपहर का खाना हमारे साथ. चलो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लिखो. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट वी विल डू, we will use these two equations only. So we'll start with the second equation. S equal to u t plus half r t square. In our third equation, we will try to abolish time. समय को यहां से निकाल दीजिए. How? यहां से टाइम का वैल्यू निकालिए. टाइम कितना है? v माइनस यू बाई ए. देखो तो बच्चा समझ में आया कि नहीं? राइट? और ये टाइम वा को यहां पे इंजेक्ट मारेंगे. अभी समझ आया? देखिए ये जो टाइम है ना, ये टाइम को यहां पे डालेंगे. ये टाइम वा को इंजेक्ट मारेंगे. अभी इसको यहां इंजेक्ट करेंगे. चलिए इंजेक्ट करते हैं. हमको देखिए, आप मत कीजिए, अभी आपको देखिए. यू टी के जगह पे लिखा u इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए प्लस हाफ ए v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर. अग्रीड? राइट. इसको क्या करेंगे, इसको लिखा हमने u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस हाफ इंटू नीचे को अलग करके स्क्वायर ले लिया, ऊपर को अलग करके स्क्वायर ले लिया, और यहां पे एक a भी था. डू यू अंडरस्टैंड? हाफ ए स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर. राइट? This a can now cancel the a square. Do you agree? And so this whole thing becomes half, और हाफ को भी हटा देते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं. आपने समझा कि नहीं देखना, मैं जस्ट यहाँ पे 2a लिख देता हूं. देखो तो, हैव यू अंडरस्टूड? अरे का है ससुरा, क्या है यहाँ पे? हाफ a है ना, यहाँ पे क्या है? v माइनस यू स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर. a ने a स्क्वायर को काट लिया तो क्या हो गया? 2a. कटहल तोड़ के दिखाएं तभी ना तो समझ में आता है. ठीक है, वही लिखा है आप. ठीक, क्लियर? नाउ लेट्स गो फर्दर. 2a and a, what is the LSM? LSM is 2a. If 2a divided by a is 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 uv माइनस यू स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देखो तो बच्चा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? ओके. ऐसे नंबर डंडी 2a. 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर. 2uv कट्टी. ओके. एंड v स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसको पहले लिखा माइनस 2u स्क्वायर ओक्का माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. समझ में आया? अरे 2 into uv is what? 2uv. 2 into u square is minus 2u square. I'm saying like this because I'm teaching from 6:30 सुबह से. हाँ, और कल रात पावर नहीं था तो रात को सो भी नहीं पाया वैसे. ठीक है. a minus b whole square. a square minus 2ab plus b square. a square minus 2ab plus b square. ఇది సేమ్ పిల్లల్లో చుయి. ఇది మైనస్ 2u స్క్వేర్, ఇది పాజిటివ్ 2u స్క్వేర్, తర్వాత ఎంత? ఒక్క నెగటివ్ u స్క్వేర్. రైట్? సో ఫైనలీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఎంత ఉంది? s. s is equal to v square minus u square divided by 2a. So the way we write it is 2as is equal to v square minus u square, but the best way to write the expression is v square is equal to u square minus 2as. This is your third equation of motion.
v square is equal to, bring the u square this side, u square plus 2, oh sorry u square plus, एक मिनट, v square is equal to u square plus 2as, u square इधर आएगा and plus 2as. And obviously you see, if there is, look at the beauty of the formula, if the acceleration is positive, the final velocity should be more than the initial velocity. So the square of the final velocity should be more than the square of the initial velocity. So the square of the final velocity is square of the initial velocity plus something. If acceleration is 0, then both are same. समझ में आया? Let's solve that first problem में हमें distance कितना मिला था? Sorry, in the second problem, how much did we get the distance as? In the second problem, we got the distance as 5 plus 5, 25. In the first problem, we got it as 50, right? Now, I'm just rubbing this off. I'm just taking that problem once again and I'll leave you, don't worry. This started from initial velocity equal to 0, traveled a time of 10 seconds with an acceleration of 1 meter per second square, and we found out that the displacement it covered was 50 meters. This is what we found out, right? What are the three equations of motion? V is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and the last one just now we found v square equal to u square plus 2as. In this problem, we had asked to find this s is equal to how much? We calculated s using second equation. Now you ask me, sir, can we not use third equation? Because final velocity, we know that the final velocity we have to actually calculate what is the final velocity. U we know, A we know, S we have to find out. How much was the final velocity? पहले हमने calculate किया था, इसका final velocity कितना आया था? 10 meters per second. How did you calculate, sir? V is equal to u plus at, where u is equal to 0, a is 1 into 10. So we found out 10. So we know what is the final velocity. इसको use करके देखते हैं 50 आता है कि नहीं, ठीक है? So let's use this formula. V square. V square means 10 square is equal to u square, 0 square plus 2 into a into s. A का वैल्यू कितना है? 1. S का वैल्यू कितना है? S. और 100 is equal to 2s और s is equal to 100 divided by 2. ससुरा का है, नहीं आएगा, मैच कर दिया. स्टेन गन, मशीन गन एंड गोरखा खुकरी. You will take the weapon based on what the enemy is. If the enemy is right in front of you, तुम्हारा गला दबा रहा है, तब तुम बैठ के let me take out my Sten gun, fit the telephoto lens and then खुकरी निकालो और गला काट दो उसका. Close quarter battle है वो. एक बार और कैमरा बंद करेगा ना, what is his name? अंगद की गदा से पीटूंगा मैं, ठीक है? देखो, अंगद इज अ बैड बॉय, अंगद इज अ बैड बॉय, बैड है. हाँ हाँ, क्यों? एक गोली मत मारो मेरे को. योर कैमरा इज इंटीग्रेटेड विथ योर लैपटॉप और इट्स एन एक्सटर्नल कैमरा. मेरे घर में ना एक्सटर्नल कैमरा है. मैं पूरा अमेरिका में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है. पीछे से मेरी बीवी आके कुछ बोलती है, वो भी आ जाता है कैप्चर में. तुम लोगों का क्यों डिस्कनेक्ट होता है ये नहीं पता है मुझे. अगर डिस्कनेक्ट होता है ना, आज ही अमेज़न में एक नया कैमरा खरीद लो. आई एम रूथलेस. नेक्स्ट टाइम होगा मैं राइट क्लिक करूंगा. एंड जूम में राइट क्लिक करने से क्या लिखता है पता है? यू हैव बीन रिमूव नहीं लिखता है, बेइज्जती करके लिखता है, यू हैव बीन किक्ड आउट ऑफ द मीटिंग. आई कैन शो यू. एनीवेज द क्लास हैज एंडेड. इफ यू वांट टू सी आई कैन शो यू. राइट क्लिक करके अगर रिमूव लिखो ना, किक आउट फ्रॉम द मीटिंग. इट डजंट से रिमूव. आपको चाहिए क्या? और फिर स्क्रीनशॉट लेके ना मैं मिसेस शिवानी सिंह को भेज दूंगा, क्योंकि मजा तो उस पार्ट में आएगा ना मुझे. ये आपके बेटे को आज अवार्ड मिला था मैडम, उसे धक्के देके इस क्लास से बाहर निकाल दिया गया थोड़ा और मिर्ची डाल के. समझ में आया? सो विच टाइप ऑफ फॉर्मूला वी विल यूज नेक्स्ट क्लास? वी विल डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स. विल third formula is a formula. What is missing here? Time. If they give us a problem where there is no time, then we can't use these formulas because these formulas have got time dependency. एक चीज सारे फॉर्मूला में है, बोलो तो क्या? एक्सीलरेशन. क्योंकि तुम्हारा चैप्टर ही है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड. ये ससुरा को नहीं भूल सकते हो. यही तो बताएगा कि स्पीड बढ़ रहा है कि स्पीड घट रहा है. ये रिटार्डेशन होगा तो स्पीड घटेगा, एक्सीलरेशन है तो बढ़ेगा.
Time for a strategic timeout, and you can note down whatever it is, and then just get lost. Ole, good luck from here. I'm done. If you have any queries, you can ask. No. Okay, समझ में आया? Look at Anusha. Wow, she's so happy child. I like her. किसने बोला था देहरादून जाने के लिए? बैल मुझे मार, है ना? Wear red clothes and walk in front of a buffalo. The bull always loves you. बैल मुझे मार. Anya को देखो. Anya, did you know that you traveled outside India? Is this much clarity there with you or not? Okay, good. Which side you went of India, east or west? And lower. Acha, which sea was it? Which sea was it? Sea or mountains? What was it? Sea. What is the name of the sea? Pacific Ocean. Very good. We actually, this time you went to Arctic, and since the heat is too much, the snow had melted in Arctic, you know. Next year we will go to the Antarctic Ocean. I will make sure we'll carry some heat from Hyderabad and we'll melt it there also. Oh, मैं इसको बंद कर देता हूँ, यार बेचारा रिकॉर्ड हो गया ये स्टेटमेंट. Okay.